कैसे हो आप लोग? हे एवरीवन, इट्स 278। अरे ये कौन सा भांग भांग पी के बनाता है पता नहीं। स्ट्रीम 278 लिख के दिया था। 278 लिख के दिया था क्या ही कथा लोग। रो अभी बोलता हूँ कि स्ट्रीम का टाइटल एडिट 278 है ना। आपको मैं हेलो हेलो यस हेलो पे। अरे मैं थोड़ा बाहर गया था घूमने अभी तो आया। I saw the questions right now. I found the third question to be quite interesting. Even the fourth question was काफी अच्छा था. Do you have some tough समझा है क्या? पुष्पा वाला पोस्ट हाँ वॉइस इको कर रही है, वॉइस इको कर रही है सबके लिए। चेक करने दो मेरे को। Do you have some tough समझा है क्या? पुष्पा वाला पोस्ट हाँ वॉइस इको हो रही है क्या? वॉइस इको हो रही है। लास्ट स्ट्रीम कल करेंगे, कल कल 10 बजे करेंगे। जाते आते पैसे कमा लेंगे अपन भी। कल लास्ट स्ट्रीम कर देंगे। अलविदा। Waiting for everyone to join. Let's wait for a couple of minutes. We start after that. 1 लाख पर स्ट्रीम भाई, 1 लाख पर स्ट्रीम मिलता तो मैं सही बता रहा हूँ। ये आज का वीडियो किसी ने देखा मैंने जो डाला था स्ट्राइवर चैनल पे, उधर ड्रीम में नहीं, गोल्स में नहीं होता, कंप्लीटेड में होता। रिंग वाली गाड़ी। पागल है क्या? 1 लाख पर स्ट्रीम समझता ही कितना होता है। मिलता है ना पैसा। Are you a big fan of Nadal? No, I'm a big fan of Nadal. Actually, I'm a big fan of Djokovic, Nadal, Federer. I think but all of these three are like हमें compare नहीं करना चाहिए. That's my stuff. I think Federer is someone whom you should look for. कितना एज हो गया but still fit, is still one of the best. Like ठीक है, he might be losing out to Djokovic but ऐसे one sided तो नहीं हारता है. So at 40 he's still like 41 42, he's so fit. When you see Nadal today, he was down by 2 sets, he came back. think शायद ही दुनिया में कोई ऐसा प्लेयर है जो लास्ट शॉट तक पूरा देता है। तो नडाल हैज दैट नेवर डाई एटीट्यूड, तो एंड जोकोविच हैज दैट टफ ऑफ bringing out the best in him every time. So I think three of them are best and uh, greatest of all time. I think there should not be a comparison done. I think I'm a fan of all of these three. I'm a big fan of, to be very honest, Federer because of the age and because of the commitment. And probably after that, I'm a bit of Djokovic and then Nadal if I have to number them. I think everyone is a king, and everyone, all of these three are absolutely legends. Absolute legends. Let's not compare. 278. ये रोज की पीछे मत पूछो। वेडनेसडे आ जाएगा भाई, माफ करो, वेडनेसडे आ जाएगा। वेडनेसडे आ जाएगा। ठीक है चलो। रोज आके स्ट्रीम पे मत पूछो, मैं परेशान हो गया। हाउ मेनी ऑफ यू भाई जिम जाते हो? नहीं नहीं, टाइम कहाँ है जिम के लिए? खाने के लिए घर वाले गाली देते हैं, टाइम नहीं देता उनको। जिम का बात कर रहे हो? टेल मी हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव यू डन? हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव यू डन? ये हो गया मेरे को। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव यू डन?
सर्च नेम का फंक्शनैलिटी होता है एक बड़ा क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा रे तू। बस 3 2 0 करने वाले लोग क्या कर रहे हो? Let's understand the question. Let's start with the first one. I'll give you a couple of minutes to read the question. Fourth वाला में एडिट डिस्टेंस क्यों लगेगा? फोर्थ वाले में सारे कॉम्बोज जनरेट कर सकते हैं। थर्ड वाला जिसको रोलिंग हैश पता है, इफ यू हैव अटेंडेड माय कोर्स, तो अगर रोलिंग हैश पता है तो हो जाना चाहिए। मैं वीकली करूंगा अगर ऑन माय चैनल, इफ यू गिव मी 300 वाचिंग, आई विल डू वीकली। I'll do the next Sunday on my channel. If I see 100 watching, I'll not do. But if I have very good numbers on my channel, then I'll continue. अगर 50-60 वॉचिंग हो गए तो फिर मज़ा नहीं आता, ठीक है? तो अगर वहाँ पे भी अच्छे नंबर्स आएंगे तो अपन करेंगे वीकली हर संडे। आई डू फॉर 2-3 संडेज एंड इफ आई सी द रेस्पॉन्स इज वेरी बैड, फिर मैं नहीं करूँगा। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इफ यू वांट टू डू समथिंग यू वांट दैट रेस्पॉन्स टू बी हाई। बट हाँ, करेंगे नेक्स्ट 300-400 वॉचिंग होगा तो फिर मज़ा आता है करने में भी, ठीक है? with bitmask plus dfs, the fourth one I was thinking of union, like dsu से करने का। I did submit a code with dsu and it did run, so I'll be teaching the dsu। dfs का मेरे को आइडिया नहीं है कैसे होगा, क्योंकि क्वेश्चन देखते मेरे दिमाग में सबसे पहले dsu यूनियन ही आया है। तो आई विल probably be doing that dsu यूनियन। आप लोग देख सकते हो आपको कौन सा करना है, बट आई विल बी डूइंग द dsu यूनियन मोस्ट probably। So next Sunday, so एक there's a happy news, हमें सैटरडे के लिए स्पॉन्सर मिल गया है। सैटरडे अपन कोड स्टूडियो करेंगे, कोड स्टूडियो का कॉन्टेस्ट, तो वो लोग स्पॉन्सर कर देंगे। और संडे अपन लीड कोड वीकली करेंगे, वो स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं, बट एक स्पॉन्सर होगा तो मोटिवेशन रहेगा कि सैटरडे संडे दोनों दिन स्ट्रीम करते रहेंगे। तो सैटरडे 10 बजे 10:30 बजे स्ट्रीम होगा एंड संडे 10 बजे स्ट्रीम होगा, ठीक है? सैटरडे वाला आपका कोड स्टूडियो का कॉन्टेस्ट रहेगा एंड संडे वाला लीड कोड वीकली, ठीक है? So there will be motivation for me as well and motivation for you as well to watch streams. DSU is covered, yeah. Take you forward में DSU is covered in the graph का 20th या 19th लेक्चर पे। ग्राफ्स के लिए ग्राफ सीरीज देख लो, उसके बाद आप लीड कोड कर लो तो काफी रहता है। let's read the problem, right? रोलिंग हैश फंक्शन, अरे मैंने अपने कोर्स पे पढ़ाया था, लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ माय कोर्स रोलिंग हैश। अब कोर्स नहीं होता, अब कोर्स चलता नहीं है, कोर्स बंद हो गया, उतना टाइम नहीं है तो कोर्स मैंने बंद कर दिया। एक सेकेंड, ये ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? यूक्यू एवरीवन यूक्यू। The question states, keep multiplying found values by 2. Okay, so you are given an array of integers num. Okay, so you're given an array of integers num. You are also given an integer original, which is the first number that needs to be searched in for nums. You then do the following steps. Okay, so what are the following steps? If original is found in number, multiply it by 2. That is, original will go twice. If it's not found, you stop. Repeat this process with new number as long as you keep finding the number. Return the final value of original. So original is 3. 3 is there. So you found 3. So 3 is multiplied by 2 and it gives you 6. Do you find 6? 6 is found. So 6 is multiplied by 2 to give 12. Is 12 found? Yes, 12 is found. So 12 is multiplied by 2 to get 24. Is 24 there? No. So you stop.
So since 24 is not there, you stop. Thereby the answer is 24. Okay. What is the full form of UQ? Understand question. Understood question. So 4 is not found, so 4 ही जाएगा. So basically, you take a number and you see if that is present or not. So what's the like over here? You were lucky that 3 was here, 6 was here, 12 was here. You might get an array where like you are given 6, 3, and 12 like this. So you can't just traverse from left to right. You need to understand this thing. You just cannot traverse from left to right. So you need to be like, okay, let's do one thing. What do I need to do? I need to look up if 3 is present or not. So whenever there is something as lookup, what do you think of? Hashing. That's the first thing that you think of whenever there is lookup. So why don't you hash? No need to sort, because if you sort, then it will go n log n. And I see the constraints being original number like to be 100, like 1000. So we can probably create 1000 ka array. Then sorting will not be there. So what I'll do is I will create. थोड़ा सा नीचे करता हूँ, रुको एक सेकेंड. So अपन क्या करेंगे, vector int, probably we can create a frequency and it'll say 1001 and we can say 0. Okay, and after that let's iterate for auto of it on nums, and I can do frequency of it plus plus. Done. So what I've done is instead of hash map, because if I take map it will be still be having a login. Even if I take unordered map, then still, that's instead of that what I did was I took a frequency array of size 1001 and I initialized everything with 0. Now I've done a frequency it. So what I'll do is I'll keep on doing, I'll just run a infinite loop, and I say, okay, if the original number is there in the frequency array, like if a frequency of original number is there, then what I'll do is I'll say original, can you multiply yourself by 2? Else can you just break out, and once you break out, can you return whatever is the original number? It should be fine, and I'll try to run this off. Okay. Yeah, again, as I said, you can use set as well, but the problem with set is you are introducing a log n. ये क्या हो गया भाई? 1000 को into 2 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 frequency of original. क्या हो गया इसको? बफर sanitization, buffer overflow. Why is it giving me buffer overflow? Did not give. Ideally original is 1, so 1 into 2 into इसको एक बार ऐसे लिख देता हूँ, सही तो था. As I said, sorting will pass. I'm not saying it will not pass. The problem is not with sorting. The problem is with the moment you go off. वो problem है. Problem sorting के साथ नहीं है. You just need to make sure if original is lesser than equal to 1000, because if you're declaring something like frequency, then if it's more than 1000, then it will go runtime error. So just make sure you do this. Okay, so now it should be fine, running fine. Now if you just make sure you give this check, otherwise it will go runtime error. And after that you can easily. अरे अभी भी क्या हो गया इसको? आज क्या पंगे हैं तेरे को ब्रो? 1001 पे 1000 का इंडेक्स तो आएगा ही. अगर ओरिजिनल लेसर देन इक्वल टू 1000 है तब अब अरे एंड accepted. Cool. So has everyone understood this? अरे चलेगा, देखो, अरे एक चीज समझो आप, लीड कोड एक्सेप्टेड. सी, come out of the intention that stop doing lead code to get accepted. If you're doing lead code with the motive of getting accepted, then stop doing it. Lead code is interview centric platform. You have to always apply the logic which takes the smallest time. There will be solution which are n log n and it does get accepted, but the better solution might be big of n. Just because n log n got accepted, you should not stop yourself from learning the big of n solution, because in interviews, interviewer will tell you, I don't care if it's getting accepted, I want the most optimal solution, and that's big of n. Don't stop yourself from learning. Got it? Make sense, everyone? Are you asked from everyone?
So don't focus on just accept it. Try to write the most optimal code. That should be the कॉन्टेस्ट के लिए मतलब ट्राई करो करने का ऑप्टिमल, क्योंकि उसको ऐसे इंटरव्यू ट्रीट करो। एंड ठीक है, कॉन्टेस्ट के बाद भले ऑप्टिमल करो, तुम्हारी मर्जी है, बट डोंट स्टॉप फॉर एक्सेप्टेड। इन कॉन्टेस्ट यू कैन गो फॉर वॉट एवर इज कमिंग एज एक्सेप्टेड, बट outside of contest, after contest, try to go through the most optimal solution. Okay, us you see everyone, your graph series on TUF. Watch my graph series on TUF. For practice, you can watch on CodeBeyond. There are some problems that I've done on CodeBeyond from Leetcode. ठीक है, ओके कूल। जितना लोग बोल रहे लीड कोड कनेक्शन एक्सेप्ट मैं नहीं कर सकता, आई हैव अराउंड 25,000 कनेक्शन रिक्वेस्ट पेंडिंग, एंड लीड एंड लिंक्डइन ओनली अलाउज, सॉरी लीड कोड नहीं, लिंक्डइन ओनली अलाउज 30,000 कनेक्शन। तो ऑलरेडी मेरे काफ़ी कनेक्शन है, 25,000 मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो सॉरी फॉर दैट। आपको मैसेज करना है, इंस्टाग्राम इज ऑलवेज ओपन, फील फ्री टू टेक्स्ट। हाँ, डोंट डोंट पिंग विद डाउट्स, मैं फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ूँ, मैं रिप्लाई नहीं करता। इफ़ यू हैव अ जेन्युइन डाउट, कुछ भी जेन्युइन डाउट है, एकदम जेन्युइन, आप पिंग करो, मैं पक्का रिप्लाई करता हूँ। हाँ, बेकार सा सेम घिसा पिटा क्वेश्चन मैं रिप्लाई नहीं करता। Okay, cool. So we've done this. Let's move to the next one. Okay, let's. I want you to read the question, and I will have a timer, 5 minutes, so that you can read the question. Please, please, please read the question. I want you to read the question. Guys, please read the question. भाई लास्ट क्वेश्चन करा दे, सारा कराते हैं भाई, अपन अपन इधर सब करते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो? इफ यू नो थर्ड वाला, आई थिंक थर्ड वाला वाज इजी फॉर मी। आई नो रोलिंग हैश, so आई थिंक इफ दैट वाज इन द कॉन्टेक्स्ट आई वुड हैव डन इट इन 5 मिनट के अंदर ही हो जाता। मतलब मेरे को रोलिंग हैश पता है, मतलब अगर किसी ने मेरा कोर्स किया तो आप उससे पूछ सकते हो, मैं वो पढ़ाता हूँ। वो जो आप सब स्ट्रिंग स्लाइड कराते हो वो मैं पढ़ाता हूँ, तो मुझे ऑलरेडी वो लॉजिक पता था। तो आई थिंक इट्स नॉट अ टफ इफ यू नो द लॉजिक। स्प्रिंग algo कहाँ से पढ़े? आई थिंक तुषार रॉय हैज डन अ गुड जॉब इन टीचिंग, पर इंट्यूशन आई थिंक स्प्रिंग algo उसका उतना अच्छा है नहीं, आपको खुद ही से समझना पड़ेगा इंट्यूशन, क्योंकि वो एक ऐसा चीज़ है ना, इट्स इट्स सच अ कॉन्सेप्ट कि अगर आप पढ़ाने जाओगे, बट आप शायद सोचोगे आप पढ़ा दिए, बट यू कांट गिव द इंट्यूशन टू एवरीवन। It's a very complicated topic. Spring rolling hash is easy, but when you come to something as Rabin का भी easy है, KMP and prefix function जब आते हो, z array and prefix function, you think you can teach, but it's very tough to teach the intuition. So I'll recommend खुद से पढ़ो, जितना खुद से करोगे उतना easy हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सीए का नंबर तुमने टेक्स्ट किया था क्या? मैं स्टोरी लगा दूंगा, उसका नंबर पिंग करना उसको बैठ। स्ट्रिंग एल्गोरिथम्स ट्राई करो खुद से ड्राई रन करने का, यू विल गेट द इंट्यूशन। बहुत लोगों ने पढ़ा है, लेकिन इंट्यूशन बहुत कम लोगों ने दिया है, मतलब मुझे तो कहीं नहीं मिला। पढ़ाया काफ़ी लोगों ने, लेकिन इंट्यूशन किसी ने नहीं दिया है, तो वो थोड़ा टफ है इंट्यूशन। मतलब बहुत बार आपको कोड लिख के ही समझाना पड़ता है, तो स्ट्रिंग एल्गोरिथम इज आई फील इट्स वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक्स टू टीच। तो वो थोड़ा सा देख सकते हो आप। अब्दुल बारी एक्चुअली काफ़ी अच्छा पढ़ाए थे उन्होंने, बट उन्होंने कोड नहीं लिखा, बट ही गिव द मोर इंट्यूशन। एंड फिर तुषार रॉय ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया। मैंने तुषार रॉय का देखा था, बट उतना क्लैरिटी नहीं है, बट तुषार रॉय का देखा, अगर आप पेन एंड पेपर पे खुद से करोगे तो यू टेन टू गेट एन इंट्यूशन। ठीक है, अब्दुल बारी सर ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया, आप उनका भी देख सकते हो ना। मतलब अगर आपको प्रीफिक्स आता है तो जी आने का ज़रूरत नहीं है, आपको जी आता है तो प्रीफिक्स आने का ज़रूरत नहीं, क्या सब बात। तो एक एक आ जाएगा तो काफ़ी है, सारे प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। मेहरबानी जान
जाने खुद से खुद गया गुजरता सा लम्हा के तुझसे अब पोपट हो जाएगा। मुझे ये गाना बहुत पसंद है तो मैं गाता रहता हूँ। डोंट एजुकेटिव प्लेटफॉर्म इज वेरी गुड फॉर द सिस्टम डिजाइन वाला कोर्स, काफी अच्छा है, स्ट्रक्चर्ड है। गिटार। क्वेश्चन पढ़ो 1 मिनट 6 सेकंड बचा है। गूगल के लिए सिस्टम डिजाइन गूगल नहीं पूछता यार, डीएस ही पूछता है सिर्फ गूगल। अगर एसडी जा रहे तो डीएस ही पूछता है। हाँ, दूसरे रोल्स के लिए थोड़ा डिजाइन पूछता है, एप्लीकेशन इंजीनियर हो गया, वो सारे रोल्स के लिए डिजाइन पूछता है। मैक्स फ्लो मिन फ्लो मैं ही भूल गया हूँ, जब सीपी करता था तभी आता था, भूल गया। 24 seconds. Give me UQ if you understood the question. Give me UQ if you understood the question. UQ. Okay, UQ. Okay, so the time is completed. Let's see the question. So basically it states, to be in very short, the question states you're given a zero based binary array. Very important, binary array means the array will only contain 0 and 1s, okay, of length n. Now the numbers can be divided at index I, like at every index I you can divide the numbers, cool, into two arrays, and possibly nums left and nums right. So nums left has all elements of nums between 0 and I minus 1. Nums right will have all the elements from I to n minus 1. If you're dividing it at ith index, then it will have everything from the left, and the right will have everything from the right. Now if I is equal to 0, then the left part will be empty, and if I is standing at the last index, then obviously the right part will always be empty. Very obvious. So the division score of an index I, it's very important, the sum of the number of zeros in the left and the sum of the number of ones in the right. So number of zeros on the left and number of ones in the right are added. So for an example, if I do a division here, so on the left there are 0 zeros, on the right there are 1 1, so the summation will be 1. If I do a division here, on the left there is 1 0, on the right there is 1 1, so the sum is 2. If I do a division here, on the left there are 2 zeros, on the right there are 1 1, the sum is 3. Similarly, you can gather all the sums, and what you see is the maximum sum that you can gather is 3. So how many, like where does this maximum sum 3 occurs? So if you carefully observe, it occurs once here and once here. So you just need to return the indexes where the maximum score occurs. Clear hai? Clear hai question? Question clear है? क्लियर है क्वेश्चन आपको? UQ from everyone? So what's the standard way that you can solve this? So basically, the generic logic will be, the generic way that I can think of is, I'll just traverse every index by index, okay, and for every index, when I'm standing at the index, I get the left zeros, I get the right ones, and whatever is the left zeros and the right ones, I'll add them up. And whenever I get the maximum, yes, whenever I get the maximum value, I'll store those indexes. That's the generic logic that initially comes to my brain, right? So that is something which I can probably follow, and let's see if we get the answer. So can I say if there is an index 0, index 1, index 2, index 3, index 4, so initially when you are standing at index 0, I repeat, initially when you are standing at the index 0, correct?
how many number of ones are there? Can I say that will be the summation of the array? The number of ones on the right when you stand at the index 0 will be the summation. Can I say the number of ones will be the summation of the array? Do you agree that the number of ones will be the summation of the array to start off with? Correct. And the number of zeros will be initially 0 when you stand at the index 0. So this is how you can easily start off with. This is how you can easily start off with. Now when you move this pointer to the next guy, what you can do is, there was a 0, you can just upgrade the number of zeros to 1. Next, if you just move here, again you can keep on upgrading. So in this way, can you just keep on upgrading? Can you just keep on upgrading every possible time? And slowly for every index you will get a value, and whatever is the maximum value for those maximum, like whichever is the maximum value, you can store the index. Are you getting an idea of the concept what I'm trying to say? I'm not willing to use any prefix array or suffix array. I know when I move, if there is a 0, for an example, let's take this first example and explain. 0 0 1 0. Okay, initially the number of ones is 1, initially the number of zeros is 0, and I'm assuming the max initially to be the number of ones, which is 1. Okay, so that's what I have initially taken. Now let's get started. So I'm at here. Okay, so I'm assuming there is a divider here, and the right portion is containing this, and the left portion is containing this. So as of now, the number of zeros is 0, the number of ones is 1. So that's equivalent to the max that I have. So in my answer, yes, I repeat, in my answer, I'll store this index 0. Next, I will move this to here. So if I move this to here, this 0 will be now the part of the left. So the number of zeros will increase to 1. The number of zeros will now increase to 1. Now, if I'm standing here, this is where the boundary is. So the new right is this. Over here, the number of 1 is 1. The number of 0 is 1. So the max will change to 2. Now, if I say, now can I be very sure that if the max has changed to something as 2, thereby I can say, okay, no need to store this because the max is no more 1. The maximum division score, because they want the highest possible division score, is 2. So where did I get that? I got that at index 1. Please store that. Fine. Let's move it. So if I move here, this 0 will count to make the number of zeros as 2. Yes. Now, this will be the right and this will be the left. So can I say now 1 is happening once, 0 is occurring twice. So the max will become 3. And if the max becomes 3, again, there is no need to store this. I have a new max, which is 3. Perfect. Next, I will move here. So if I move here, this 1 is now on the left. So 1 will reduce. Remember this, if a 1 goes on the left, it will reduce because I'm counting the right ones. And the zeros will stay as 2. This time on the summation of zeros and 2s, please take care. This time on the summation of zeros and 2s, it's giving you 2. But that's not equivalent to your max. So you don't consider this. Again, when you move to the back end, it means when you cross this particular index, this 0 will be added to the left. So the zeros will become 3. 0 plus 3 this time is equivalent to max, which is 3. Thereby you can say one more index you got, that's right here, which is index 4. Right after this, which is index 4. So can I say the possible maximum values that you got was 3, and you got that at index 2 and 4. So please return that. US, if you've understood what I'm trying to do. I'm just trying to keep a track of the right ones and the left zeros. And I'm just trying to add it up, Is this clear to everyone? US? US from everyone. There's no need to take a prefix or a suffix sum, because if you're taking a prefix sum or a suffix sum, what you will end up doing is you will end up including a space, which we don't want. So there's no need to include a space. So what I'll say is, okay, hey, listen, the initially right ones will definitely be the sum of the array. So I can just quickly just sum it up to get the right ones. Right ones is this.
Can I say the initial max will be right ones? And can I say the left zeros will be initially 0? Perfect. So can I say I can start with I0 and I can go on till nums.size, because I know there will be something as, yes, because I know there will be something as the last guy, because you saw that when you reach this index, you have to consider this entire thing, which is index 4. So I'll try to move till the fourth index. Okay, I'll try to move till the fourth index. Perfect. So can I say this? Can I say this? If as of now, like I need to store the answer as well. So I can keep a vector which stores the answer. I'll store the answer over here, and I'll be like, okay, hey, listen, if left zeros plus right ones is equal to the mx, that means that's equal to this. So what you can do is, listen, can you just please store that into my answer? Okay, you just please store that into my answer. So please store this index into your answer. So let's see if they're storing zero based indexing. Yes, they are storing zero based indexing. So please store it. But before this, I have to be very sure if this is crossing max. If this is crossing max, so the max has to be updated. Is the max has to be updated to left zeros, because every time I come, I know there will be some zeros. So this is what I will do. Correct. अरे ये IT 0 ऐड कर दोगे तो राइट वंस में क्या ही फर्क पड़ेगा? क्या ही फर्क पड़ेगा? राइट वंस पे 0 भी ऐड कर दोगे तो ये वाला होगा लेफ्ट zeros max. So if it is crossing, I'll say this, and in the answer the previous indexes will be cleared. There's no need to store previous indexes. So in this way, if I'm standing at a particular index, I can get the left zeros and the right ones, and I can just, if it's equivalent to the max, I can store it. If it's going beyond, then I can just clear it, and after that it will store it. Now when I move to the next index, remember this, when I move to the next index, this particular guy will be added to the left, because even if I'm standing here, this particular guy is added to the left. So just make sure if I is still lesser than the index, what you will say is, okay, on the right ones, the right ones will be subtracted if there was a right one. Very, very important. If there was a right one, please consider subtracting it. And if left zeros, because we're moving to the next, please make sure if the nums of I is a 0, please add it. Please add it. It's very important. Right ones will get subtracted if there is someone who is going to the left, and if there is a left 0, you will add it. So this is how you can easily do it on the nums.size. And once you have done this, you can say I will be returning the answer, right? So without prefix sum and suffix sum, there's no need to write prefix sum and suffix sum. We can easily do it. ठीक है, काफी सिंपल था. जब जैसे ही मूव कर रहे हैं, जो भी वन से उसको लेफ्ट की तरफ जाएगा तो वो राइट से हट जाएगा, और जो लेफ्ट जीरो है वो ऐड होते रहेगा. ठीक है. Dot clear will not take big of n over here, because you will not have all the indexes in stored. So it will be at max n time. This will शायद पहले एक एलिमेंट हो, फिर दो एलिमेंट हो, फिर तीन एलिमेंट हो. तो ये क्लियर बहुत ही कम बार काम आएगा, क्योंकि हर वक्त तो आपका मैक्स एक्सीड नहीं करेगा ना. So this clear will not be executed a lot of times. Even if it is executed, it will be not containing a lot of elements. It will be executed once, twice, thrice, not n times. We need to understand this. If it's getting executed n times, then the vector answer ka size will be 1, so it doesn't matter. Got it, Dipesh? Dipesh, have you got it? Time complexity wala scene. Cool. Cool. जिनको कोड का दिक्कत हो रहा है, I will recommend you to just do a dry run. You'll understand easily. Let's take this example and just plainly do a dry run. 0 0 1 0. Just take this example and do a dry run. You'll easily टपरवेयर बॉटल खरीदो ना. भाई ओए, रुक. यार पानी खत्म हो गया.
अपन के पास पानी का बॉटल है, ये ला पानी का बॉटल है, अच्छा वाला है, क्या गरीब नहीं है भाई अपन। Basically, Chirag, if you're reaching the last index, there is no need to add it. So what I did was, initially, you are here, so there will be left zeros, right ones. So you did the job, left zeros, and the moment the pointer moved here, before moving, just do this. Add the 0 to the left zeros, and if it was 1, reduce it. After that, again move here. But before moving, add the 0 to the left zeros. Next, before moving, you are at 1. So this one will go to the left. So right one will subtract. Next, when you move, fine. So when you move, again the 0 will be added to the left zeros. But on the last step, when you move, because this is exceeding, this does not have anything. So if you don't write this, it will give runtime error. Because at the last step, there is nothing which will be added to the left. Got it? Got it? किसने पूछा था? पूछा था ये क्वेश्चन। चिराग समझ में आ गया? Got this question? Why am I doing this? Because at the last step, it's very important. ठीक है, समझ में आ गया सबको? Can I get an US from everyone? Can I get an US from everyone? जिनको लाइन 21 22 में दिक्कत हो रहा है, प्लीज डू द ड्राई रन बाय योरसेल्फ. Please do the dry run by yourself. Yes, yes. US looks like most of you have understood. That's why I'm getting a US. Most of you have understood, so I'll move to the next. US, whoever is new, US means understood. US means understood. Okay, so most of you have understood, so I'll move to the next. Okay, let's move to the next. And as usual, I'll have the timer on. Default timer ही शुरू होता है क्या इनका? As usual, I have the timer on. Please. चलो टाइमर शुरू है. क्वेश्चन देख लो. The timer is ready. नहीं, रोलिंग हैश का वीडियो नहीं. Unfortunately, the rolling hash video is not there. Difficulty level अच्छा था. I think I found the third question to be good, and the fourth question was very good. Fourth question also I found it very good. ठीक है. Time complexity the previous was big of n यार. इसमें क्या पूछ? Single pass. N big of n and the clear will hardly take another n plus n. No, Lalit, I did not find timeout command. Did you find in macOS? Someone can find me out the timeout command. I'll be very happy.
हाँ तो क्लियर वाला जो है ना, देखो तुम क्या करोगे, तुम जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना जो क्लियर, अरे यार पिछला वाला जो क्वेश्चन था ना जो क्लियर काम कर रहा है, तो कभी तुम एक एलिमेंट क्लियर करोगे, कभी तुम दो एलिमेंट क्लियर करोगे, कभी तुम शायद एक एलिमेंट क्लियर करो, कभी शायद तुम दो एलिमेंट क्लियर करो। ओवरऑल एट मैक्स ओवरऑल कितने एलिमेंट्स क्लियर कर सकते हो, n। so can I say the outer loop is n, and internally this is what it runs, so n plus n equal to 2, and at max will be the complexity if you're using clear. Make sense everyone? Does that, is that clear? Does that make sense everyone? परफेक्ट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर हो गया ना। आईपैड में कैलकुलेटर नहीं है। डिसलाइक है क्या इस क्वेश्चंस पे? एनीवे, एनीवेज मैं अपना आईपैड रेडी कर लेता हूँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि इसको बिना आईपैड के नहीं पढ़ा सकता। वेरी गुड क्वेश्चन। इसको माउस पे पढ़ाने गया तो लग जाएंगे। सही आंसर दिया अनुज, वेरी गुड आंसर। या इट विल बी अ स्लाइडिंग विंडो। यस यस। टाइम टाइम। भाई समझ गया, टाइमर होगा, समझ गया टाइम हो गया। सेट करने दो टाइम इसको। सेट भी हो गया। चलो, तो कितने लोग क्वेश्चन समझ में आए? आई मीन इफ यू गॉट द क्वेश्चन। कूल। कितने लोग क्वेश्चन समझ में नहीं है? नहीं है, नहीं है। समझा देता हूँ। तो पहले तो एक एक थोड़ा लॉजिक समझते हैं फिर। Let's understand some logic, ठीक है? Forget about the question. So generally, what happens is the strings. How do you store them? Assume there is something as Raj. So there are a couple of ways in which people tend to store Raj in memory. Whether like, you can say in memory, I'll be like I'll store Raj only. So when you store Raj, it tends to take up a lot of space, क्योंकि हर एक कैरेक्टर कुछ बाइट्स लेता है, एंड इफ यू आर स्टोरिंग n कैरेक्टर्स कुछ बाइट्स हो जाएंगे, तो बहुत बाइट्स ले लेगा, क्योंकि दिस इज जस्ट अ वेरी स्मॉल स्ट्रिंग Raj. So it will take such bytes. If you take a very long string of 1,000 length or a 10,000 length, then there will be a lot of bytes involved if you store it in a memory. Agreed? So what generally people do is people try to use hashing to store a string. So what they say is, hey listen, I'll probably take Raj, I'll put that into a black box. Like as of now, let's treat this as a black box, and I'll generate an integer, and then I'll store this integer in the memory, because one integer if I store, it's not going to take that much of bytes
when you compare it to every character, right? Because R is going to take some bytes and A is going to take some bytes, bits, jo bhi hai, then J is also going to take something. But if you store an integer, it's going to take a very, very less amount of space. So what we say is we have to write a hashing function. We have to write an hashing function such that this particular Raj, I repeat, such that this particular Raj is expressed as an integer, is expressed as an integer. And this hashing function can be anything. It can be any formula. It can be any formula that converts the Raj to an integer. Now, question might arise, hey Striver, what if two different strings give same integer? Agreed, it might happen. So that's why the formula that you write, you have to keep in mind that the collation chances are less. The collation chances are less. I'll give you an example. The collation chances are less, ठीक है? So अभी मैं आपको एक छोटा सा example देता हूँ. You will get it. For example, let's assume a formula to be summation of s of I. Okay, let's assume the formula to be summation of s of I. And basically, if I say, okay, I'm going to take a string ABC and I'm going to pass it into the box and I'm going to get an integer. So the formula is s of I, which means ABC means A is assume I'm treating A as 1 and Z as 26. This is the treatment that I'm giving. A as 1 until Z as 26. So A will be 1, B will be 2, C will be 3. So the integer that ABC represented was 6. So ABC, if you apply this formula, it represents 6. But there is a problem in taking this formula, because if I give you a different integer, BCA, that also will generate 6. If I give you a different integer, CBA, that will also generate 6. So there might be a lot of different integers that tends to generate the same integer. So thereby, you have to make sure the formula is such that the collation chances are way, way less. But if you keep a very generic formula as summation of s of I or something which is very, very generic, then the collation chances will be significantly higher. Okay, so that's the concept of hashing. You try to represent the string in an integer such that by using some formula, and that formula has to be in such a way that the collation is very, very, very less. Is that understandable? Abhi tak pura samajh mein aaya concept of having formulas? Is the concept is it clear? The concept of having formulas? Can I get a yes if it is clear? Is it clear? Is it clear to everyone? The concept of representing a string in form of an integer, right? So now what I say is, hey, listen, I want to take a formula. So the generic formula that is used, in daily, like in almost all the blogs, all the code forces problems, a lot of places, the generic formula that is used is s of I, where remember A is treated as 1, Z is treated as 26, into p to the power I modulo, where I is 0 till I is n minus 1. So this is the generic formula that is treated, where p can be any prime number. Very, very, very important. P can be any prime number. There is a reason for it, but I'll not come to that as of now. I'm not teaching. I'm giving you basics. P is a prime number. People generally tend to take this as 29, 31, or whatever you wish to. Mod is generically 199 plus 7. So let's apply this formula and try to generate the hash for ABC. Let's try to generate apply this formula in string ABC and see what integer do I get. So A is 1, P, let's assume I take the P as 29. So 29 to the power 0 plus B is 2 into 29 to the power 1 plus C is 3 into 29 power square. Entire thing, whatever comes up, you do a mod in it. Why P is prime? There are reasons. I'll come to that. Why P is generically taken as prime. There are reasons.
if I then I have to teach a complete 3-hour class. पूरा बहुत तगड़ा reason है इसके पीछे. So this is what you will get. Assume this is generating some value. I don't have a calculator. Assume this generate a value x. So in this way you can have different guys. Now if you give B a C, same formula, B will be 2 into 29 to the power 0, A will be 1 into 29 power 1, C will be 3 into 29 power square. So it will not be the similar value. You see this? It will not be the similar value. Generally, this formula is being used to generate the value of any string converted to a hash. This is the formula being used. Why a prime? Because in future, if you're dividing, then modular inverse comes in. And in order to apply modular inverse, you need a prime. That's the generic reason. I'll tell you Q use hota hai. I'll also tell you that why prime. But as of now, if I ask you, the integer value can be in what range? The integer value generated can be in what range? If like Striver, it can be 0, it can be 1, it can be 2, so on. It can be like 199 plus 6 because you're doing a modulo. Do you agree? Guys, do you agree? Since you're doing a modulo, it will be somewhere between 0 to 199 plus 6. Agreed? Agreed. Why modulo? Overflow. Overflow ho jayega, common sense. It will go overflow. It will go overflow. You can take 3 or 5, but generally people tend to take it as 29, 30, 31. Generally people tend to take. Why? Because they want the gap to be higher. Because when you multiply it with 29 square, the gap becomes higher. When you multiply it 3 square, the gap is smaller and the chances of collision might be higher. They want कि बड़ा बड़ा नंबर ऐड होते रहे, बाद में मॉड होके छोटा हो जाए, it's okay. But initially बड़ा बड़ा नंबर ऐड होके गैपिंग बढ़ता रहे. That's why they tend to take. Now you will be like, then Striver, let's take 100 and something. You can, but they are taking an average one क्योंकि 100 square 100 cube फिर वो मॉड्यूलो तक पहुंच जाएगा जल्दी. They are taking कहीं ना कहीं. ठीक है. अभी what are the chances of overflow here? What are the chances of collision? It's 1 by 199 plus 7. Because yeah, it might collide. I'm not saying it will not collide. Might collide. But the probability of collision is this. But the probability of collision is now this. The probability of collision stands out to be 1 by 199 plus 7. Does that make sense? 1 by 199 plus 7. Please explain why 199 plus 7. Again, very simple. Because if you're multiplying something, generally you multiply 199 into 199, okay? But this can be stored in an integer. But if you multiply 110 into 110, if you're multiplying 110 into 110, can you store this in an integer? Definitely not. So on this, if you apply modulo, anything which is greater than 199 plus 7 will not make sense. So you will never allow the number to go beyond 199, because if there is a multiplication happening, it will overflow in itself. That's why generically we take the modulo to be in the range 199. क्योंकि 10 to the power 10 अगर मैं allow कर दूं स्टोर करना, 10 to the power 10 into 10 to the power 10 वो ऑलरेडी ओवरफ्लो हो जाएगा. ओवरफ्लो होने के बाद मॉड लगा के क्या फायदा है? मॉड क्यों लगाते हैं? ओवरफ्लो ना हो. So if you're allowing it to go beyond 199, then on multiplication it might overflow. That's why we never allow the number to exceed 199, so that on multiplication it stays as 198, and then we apply mod and get the number down. So is it clear? Is this clear till now? Can I get an US if it's clear till now? Why are we taking 199 and why not 1E10, 1E11 as modulo? Because then the probability will be higher. Why not 1E10, 1E11? Because you can't allow the number to grow bigger, because in multiplication it will go beyond overflow. Clear है सबको? US still here? Why prime? I'll tell the prime wala stuff थोड़ा सा बाद में. I'll tell why the prime number is taken slightly afterwards. More or less everyone has understood. Clear to everyone? I'll tell the prime number words afterwards. ठीक है, बढ़िया सबको ऑलमोस्ट हो गया. एक दो जन को अगर नहीं आया तो थोड़ा सा स्लाइड बैक करके आप देख सकते हो. ठीक है, I'll not repeat because most of the people have got it. ठीक है, so okay, so you've got key why a string is represented in a hash and how do you represent a string in a hash. ठीक है, so let's understand now something. Now what does the question say? Let's now go back. mod 1E10 भी ओवरफ्लो नहीं करेगा ना? नहीं चिराग, अभी आप नहीं समझे. अगर आप mod 1E10 करोगे, ठीक है, तो क्या चीज है, जो नंबर है
वो लेट्स से थोड़ा 1e10 के नीचे है, तो 1e10 रह गया। लेट्स से आपको एक तो कहीं कहीं एक मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो 1e10 के साथ, 1e10 का, तो 1e10 इंटू 1e10 होगा 1e20, फिर आप मॉड लगाओगे 1e10 का, बट ये 1e20 आप स्टोर कहाँ करोगे? स्टोर तो कर ही नहीं सकते हो, है कि नहीं? इसलिए हम कभी भी नंबर को ग्रो ही नहीं करने देंगे 1e9 से बड़ा, क्योंकि 1e9 इंटू 1e9 कैन बी 1e18, एंड देन हम मॉड लगा के उसको छोटा कर देंगे। बट अगर हम 1e9 से उसको ज्यादा ग्रो करने दे दिए तब तो भाई दिक्कत है कि मल्टीप्लिकेशन कहीं खुदा ना खास्ता हो गया तो भाई होगा ही नहीं। समझ में आया? चिराग गॉट इट? गॉट दिस राइट? Okay, so we have got it. Interesting question. So we have got it. The probability of collision as of now stands at, there might be collision. I'm not saying there will not be a collision. There might be collision, but the probability is 1 in n plus 7. But plus 7 because we have to keep the mod as prime. Because we want to keep the mod as prime. We want to keep the mod as prime. Why prime? For this you have to read modulo inverse. The property modulo inverse is applicable only in prime. मॉडल इनवर्स पढ़ना पड़ेगा, नंबर थ्योरी पूरा मुझे फिर वापस जाके मॉडल इनवर्स पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? 118 इंटीजर में नहीं होगा, लॉन्ग लॉन्ग में तो हो जाएगा ना, तो आपको लॉन्ग लॉन्ग डिक्लेयर करना पड़ जाएगा सारा चीज, ठीक है? तो जिनको नहीं आया समझ में थोड़ा पीछे करके देख लो ना वापस, इजी तो है, पीछे होता है यार, लाइव स्ट्रीम पीछे होता है, पीछे करके आप वापस देख लो, आराम से देखो, पूरा रात पड़ा है, कल का दिन भी पड़ा है अभी, ठीक है? अभी अपन को समझ में आ गया, ठीक है यहाँ तक? Cool. Now what is the question stating? Let's now read the question and try to incubate the logic. अभी आते हैं, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर लॉजिक पे आएंगे, ठीक है? So it says the hash of a zero index string of length k, very important, length k, given integers p, it is not saying p is prime, it isn't saying m is prime. Very very important points. P and m are not prime over here. P and m are not prime over here. So the hash of any string is the same formula that we applied. The hash of any string is the same formula that we applied. If you carefully observe, p to the power 0, p to the power 1, going on till p to the power k minus 1, modulated with them. Okay. So same thing. So you're given a string s, an integer power modulo k. Okay. So basically given a string integer power modulo k and a hash value. You have to return the substring, the first substring of s of length k, very very important, first substring of length k, such that the hash generated will be equivalent to the hash given. Okay. For an example, if you have Leetcode, if you take double E and you apply the formula 5 into 1 plus 5 into whatever it is, like the prime is 7, तो 5 into 7 होगा, it gives you the hash value of 0. Thereby you say E is the first string of length 2 which gives the same hash value as जितना उन्होंने बोला था। तो अभी समझ में आया क्या? आप रिलेट कर पा रहे हो क्वेश्चन को? समझा देता हूं अगर नहीं है। कितने लोगों को आ गया? कितने लोगों को क्वेश्चन नहीं है? How many of you got it and how many of you did not get it? How many of you got it and how many of you did not get it? So let's understand. So they are saying substrings of length 2. Substrings of length 2. Which is, yeah, P is power. Substrings of length 2, which is the first substring of length 2. LE. So if I apply the formula of LE, L कितना है? L A B C D कुछ कर लो, L कितना होगा यार? बहुत चढ़े यार, L कितना होगा? L कितना होगा भाई? L कितना है? L कितना है? L कितना है? तो बताएगा कमेंट में। मुझे काउंटर लगाना पड़ेगा, काम करता हूँ मैं। ABCD कौन लिखेगा? तो बता दो यार। 12 है क्या? 12 the formula power p to the power 0. What's p? 7 to the power 0 plus e is 5 into 7 to the power 1. ठीक है, so 12 into 7 to the power 0 is 12 plus 5 into 7 is 35. 35 plus 12 is 47 modulo 20 gives you
7. So the first substring LE of length 2 gave you a hash value of 7, but they wanted someone with a hash value of 0. So LE cannot be an answer. So LE cannot be an answer. Let's erase this. Okay. Next substring is double E. So E is 5 into 7 to the power 0 plus 5 into 7 to the power 1. 5 into 1 plus 5 into 7. 5 plus 35 is 40. 40 modulo 20 is 0 and the hash value is matching. So the first substring EE, the first substring EE is having an hash value. So they asked you to give the first substring. If ये नहीं होता तो तुम ET चेक करते, नहीं होता फिर TC चेक करते, नहीं होता फिर CO करते, नहीं होता फिर OD करते, नहीं होता फिर DE करता. And they have clearly stated there will always be an answer. So you check for all substrings of length 2 because the length has been set as 2. And the first substring that gives you the same hash value as the given hash value is what you return. Now, agar samajh mein aa gaya, please use it. Is the question clear now? Is the question clear to everyone now? Is the question clear to everyone? So the brute force will be to generate all substrings, but that will TLE. The brute force will be to generate all substrings and check, but that will give you TLE. Perfect, guys. Perfect. Super. So the brute force will be to generate all KLN substrings, and generate hashes. And compare. Agreed. So difference between subsequence and substring. अगर आपको ये difference नहीं पता तो आप ये question मत करो, ठीक है? This is how you do it, ठीक है? अगर आपको substring and subsequence का difference नहीं पता, ये question थोड़ा high level हो जाएगा. आप पहले basics clear कर लो फिर करना, ठीक है? So generate all KLN substring and generate hashes and compare. So you can generate all KLN substrings. Do you agree? So, but that will take n into k time, because for every k length you will go and compute hash. It is going to take an n into k time, which is going to be super bad, right? So it's going to take a lot of time. So obviously we can't apply that formula, and that's where we can think of a sliding window. Can we think of a sliding window? Let's think of a sliding window. सोचते हैं. मैं बहुत ही सिंपल सा स्लाइडिंग विंडो को बताता हूँ. लेट्स k इक्वल टू 3 ले लेता हूँ. 3 लेंथ का ले लेता हूँ, समझाने में इजी होगा, ठीक है? LEETCODE, ठीक है? First 3 length is LEE. First 3 length is LEE. I will try to write it in terms of. I'll try to write it in terms of formula. I'll not generate values. Let's see. So can I say the first hash that you will be, first substring of length 3 will have a hash value of L into p to the power 0 plus E into p to the power 1 plus E into p to the power 2. ये समझ मॉड होगा, मॉड नहीं लिख रहा हूं बट होगा मॉड. समझ में आया समझ में? पहला LEE, the first substring of length 3 will have this hash value. Is that clear to everyone? 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 Come on यार, बताओ फटाफट. एक स्टेप जा रहे हैं, स्लो जा रहे हैं क्योंकि बहुत नया कॉन्सेप्ट है. I'm going slow because this is indeed a new concept. Everyone understands. Now, assume you got a hash value which did not match. Your next step is, you know, the new hash will be having this T. The new string will be ET. एक T जुड़ेगा कि नहीं? अरे भाई हाँ बाबा, जुड़ेगा. और एक L जाएगा. That's how you move substrings. एक T जुड़ेगा रे बाबा, एक L जाएगा रे बाबा. जाएगा. तो अपन क्या करेंगे? अपन बोलेंगे ठीक है भाई, करते हैं, काट दो इसको क्योंकि आगे बढ़ रहा है. बढ़िया. E into p to the power 1 plus E into p to the power square. अभी T जुड़ गया. T into p to the power cube. But there is a problem. And what is the problem? ड्राइवर भैया, p to the power 0 से शुरू करना था, बढ़िया p to the power 1 से शुरू हो रहा है. प्रॉब्लम है. कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कैसे p to the power 0 से शुरू कर सकते हैं? सोच के बताना. ऑब्जर्वेशन.
P से डिवाइड, या P से डिवाइड, P से डिवाइड. बट सिंस यू आर अप्लाइंग मॉड्यूलो, रिमेंबर दिस, सिंस यू आर अप्लाइंग मॉड्यूलो, आप सीधा P से डिवाइड नहीं कर पाओगे. If you can watch number theories. In number theory, if you are dividing by P, then in modulo there is a modulo inverse concept that comes in, and that's only applicable if P is a prime and M is a prime. तो ये डिवीजन जो होता है ना सबस्ट्रिंग मैचेस के लिए, इसीलिए जब मैं हैश पढ़ा रहा था मैंने बोला P प्राइम होगा हमेशा, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के लिए मॉड्यूलो इनवर्स लगेगा. डिवाइड आप ऐसे मतलब अंधाधुन नहीं कर सकते. रिमेंबर दिस, यू कांट बी लाइक ए बाबा चल ले 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 डिवाइड कर दिया. यू कांट डू दिस. दिस इज नॉट अलाउड इन मॉड्यूलो. इन मॉड्यूलो इफ यू आर डिवाइडिंग, देयर हैज टू बी अ मॉड्यूलो इनवर्स. इन मॉड्यूलो डिविजन x by p means x into modulo inverse of p to the power mod minus 2 comma mod. थोड़ा मैथ्स पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा. ये होता है, आप सीधा डिवाइड नहीं कर सकते, इनटू ऑफ पावर ऑफ होता है. ये अगर मैथ्स पढ़ लेना समझ में आ जाएगा. अभी के लिए उसको ब्लैक बॉक्स समझो कि कर नहीं सकते, वी कांट डू इट एज ऑफ नाउ. थिंक इट एज अ ब्लैक बॉक्स दैट वी कैन नॉट डू इट नो मैटर व्हाट. तो डिवीजन तो कर नहीं सकते, अरे स्ट्राइवर है डिवीजन नहीं कर सकते. एंड डिवीजन करने के लिए पी प्राइम चाहिए था, इधर तो पी प्राइम दिया नहीं है, तो डिवीजन तो कर नहीं सकते क्योंकि मॉड्यूलो इनवर्स लगेगा. तो कैसे सॉल्व करेंगे अपन प्रॉब्लम? हाउ विल आई सॉल्व? सो आई विल से स्ट्राइवर लेट्स डू इट फ्रॉम द बैक एंड. Right. Okay. Makes sense. Let's try this. Striver, let's do it from the back end. Okay. I like, okay. Let's see. Let's apply some smart formula because I want to avoid division. Now my task is to avoid division. Okay. My task is to avoid division. So we will now try to avoid division. Okay. So let's start with the back. E into p to the power 0. D. Before moving to D, please hear me out properly. Before moving to D, what you do is you say multiply this with p. So this will become E into p to the power 1. So before moving to D, you multiply with p. So now E is p to the power 1. And the new d came in with p to the power 0. d का सही बन रहा है, देख रहे हो, स्ट्रिंग का सही बन गया. बट मुझे तो 3 लेंथ का स्ट्रिंग चाहिए था, पर दिस इज ऑफ लेंथ 2. आगे बढ़ो, आगे बढ़ने से पहले इंटू पी. तो वी मल्टीप्लाई विथ पी, e इंटू पी स्क्वायर, d इंटू पी टू द पावर 1. एंड आगे बढ़े तो o आएगा, o d e. सो o में इंटू पी टू द पावर 0 ऐड कर देंगे. ओडी का सही बना क्या? आर वी गेटिंग ओडीज हैश करेक्टली? आर वी गेटिंग ओडीज हैश करेक्टली गाइज? आर वी गेटिंग ओडीज हैश करेक्टली? यस और नो? आर वी गेटिंग ओडी हैश करेक्टली? वी आर. So this hash might not match or might match, but I want the first. मुझे यहां से फर्स्ट चाहिए था, तो मैं करते जाऊंगा, जो लास्ट वाला मिलेगा वही आंसर होगा. आगे चलते ठीक है. लेट्स मूव नेक्स्ट. वी नो वी विल गो टू सी, बट व्हेन वी गो टू सी, वी नो दिस e has to be omitted. omit. अरे बाबा 3 लेंथ का चाहिए था, एक एक्स्ट्रा लेंथ तो चाहिए ही नहीं, अपन को हटा देते हैं. अब अपन क्या करेंगे, इंटू पी करेंगे क्योंकि नेक्स्ट में जा रहे हैं. तो d इंटू पी स्क्वायर, o इंटू पी टू द पावर 1 प्लस c आया था, c इंटू पी टू द पावर 0. अरे ये 3 लेंथ का इसका भी सही बन गया. ओ भाई साहब सही चल रहा है. तो भैया ये सीओडी का भी सही बन गया, बन गया ना सीओडी का सही. अभी आगे टी पे जाते हैं. अपन टी पे जाएंगे तो टी सीओडी बनेगा, बट अपन को तो डी नहीं चाहिए, तो डी हटा, इंटू पी कर, ओ इंटू पी स्क्वायर, सी इंटू पी टू द पावर 1 प्लस टी इंटू पी टू द पावर 0. तो ऐसे करके सारा चेक कर लेंगे. डन. आया समझ में? मजा आया कि नहीं? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बाय.
कैश ऑन डिलीवरी सीओडी कैश ऑन डिलीवरी आया मजा आ गया परफेक्ट 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 कड़क मजा आ गया सबको चल दिस मैन डिजर्व्स गूगल यदि हो गया चलो चलो सबको मजा आ गया तो अपन को बस यही करना है कुछ करना ही नहीं है करते हैं चलो शुरू करते हैं तो एक चीज इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व कर लेना इनिशियली you will have to erase p square. So initially the addition was p0. So then p1, then p square. Then you have to remove p square. Then you have to slowly and slowly remove p cube क्योंकि मोस्टली आपको लास्ट वाला ही रिमूव करना है तो स्लोली एंड स्लोली p को मल्टीप्लाई करके जाना और हटा देना ठीक है yes if p was prime we could have done division because if p and modulo was prime then modulo inverse आता मैं कर लेता डिवीजन बट क्यों करना है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से काम तो हो रहा है this is not game this is not game this is not game this is not game 300 watching लीड कोड कॉन्टेस्ट मेरे चैनल पे नहीं आया ना मैं पकड़ के पीटने वाला हूँ सबको अच्छा कोड करते हैं ओवरऑल लॉजिक तो क्लियर हो गया ठीक तो अपन को क्या पता है कि पावर है मॉड्यूलो है तो आई नीड लॉन्ग हैश इक्वल टू 0 okay cool long hash is 0 let's start from the back so it's n minus 1 probably we can take n ठीक है इसका लंबा ब्रेक लूंगा मैं तक गया okay so now we know if there is someone coming in to you my hash will say hey listen someone is coming so hash plus that someone is s of I minus a plus 1 that's the integral value into p to the power 0 which is 1 p to the power 0 will always be 1 into 1 and modulo 1 this will be the value of your hash but you know one thing if I plus k is exceeding equal to n if I plus k is exceeding n then तो कुछ डिलीट नहीं करना है आपको समझना पड़ेगा ये चीज क्या आपको डिलीट करना है अगर ये एक्सीड कर जाता है थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझा देता हूँ तो समझ में आ जाएगा यहाँ पे आपको लेट्स राइट द वैल्यूज k was 3 it is 0 1 2 3 4 5 6 7 and the length was 8 so when did you get the first substring of length 3 when did you get the first substring of length 3 at integer 5 at integer 5 so 5 plus 3 जब equal to 8 हुआ तभी आपको फर्स्ट मिलेगा तो क्या क्या कैन आई से एनी आई प्लस k if it's lesser than equal to n then you are bound to get is this clear then you're bound to get the first substring of length 3 yes yes from everyone you're bound to get the stuff right and so can I say the moment I repeat the moment you're getting this then you have to just smartly start playing yes then you have to start smartly just start multiplying start subtract start करना पड़ेगा उससे पहले आप करते जाओ मल्टीप्लिकेशन p1 आया ले लो p स्क्वायर करो p क्यूब करो क्योंकि मुझे पता है p स्क्वायर पे रुकना है क्योंकि ओडी के बाद हमेशा लास्ट वाला p स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा हमेशा लास्ट वाला p स्क्वायर माइनस होगा हमेशा लास्ट वाला p स्क्वायर माइनस होगा एक निकल रहा है तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो मल्टीप्लाई करते रहो p को p1 p2 बनाते रहो लास्ट में सिर्फ निकालना है और निकालेंगे कब जब हम सी पे आएंगे तब ई को निकालेंगे बस यही तो करना है जब हम सी पे आएंगे तो ई को निकालना है आया समझ में है कि नहीं समझ में Is this clear to everyone? ये चैट कहाँ चला गया चैट क्यों नहीं दिख रहा है मेरा well in the chat
ठीक है, लाइन 7, कौन सा लाइन 7, 7 का है? ओके, आते हैं अपन इसको करते हैं. सो कैन आई से द हैश इज दिस. ओके, नाउ आई नो वन थिंग, should I remove or should I not? That's the criteria, right? Should I remove or should I not remove? Should I remove or should I not? That's the main thing. मतलब रिमूव करना है कि नहीं, और जो भी करना है लास्ट की तरफ, what do I need to check? If the hash is equal to hash value, we just store the integer. Yeah, so I can say int. As of now, int index is, by the way, it's guaranteed that answer will be present. Int index I, and you can return the substring s dot s starting from index to index plus k. के लेंथ का लेना है ना, सी प्लस प्लस में लेंथ देते हैं इंडेक्स प्लस के, लेंथ दे देते तो ले लेता है. Isn't this tricky question? See, the point is, if you know, it's not a tricky question. If you don't know, then it's a tricky. As simple as that. मतलब अगर आपको पता है तो आप 2 सेकंड में कर दोगे, आपको अगर नहीं पता है तो पूरी दुनिया निकल जाएगी, आप सोचते रहोगे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है. तो बहुत ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट आपको पता हो, वरना तो आप नहीं कर सकते. तो फंडा वही, आपको कॉन्सेप्ट पता है तो चीज़ ईजी बन जाता है, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर वो टफ बन जाता है. ठीक है, तो अगर आपको पता है कॉन्सेप्ट तो हो जाएगा. सो बाय द वे, इंडेक्स प्लस के, मैंने सी प्लस प्लस का डायरेक्टरी चेक किया तो इंडेक्स प्लस के. सो दिस इज व्हाट यू नो. नाउ यू जस्ट नीड टू राइट द रिमूव कॉन्सेप्ट. अगर आपने रिमूव का कॉन्सेप्ट लिख दिया, तो भाई आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा. तो मुझे क्या पता है, पी पहले पी 0 था, पी 1 था, पी स्क्वायर हुआ, तब तक रुकना है, तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक ये बंदा ग्रेटर देन इक्वल टू n है. So I will say, okay, let's take the prime. Probably we can take PR initially as 0, and we can say, or initially as 1 rather. We can say PR equal to PR into, very important, PR into the prime that's given to you, which is power ही prime था ना, power multiplied of modulo mod. ठीक है, so keep on multiplying, स्क्वायर तक पहुंच जाओगे, एंड जैसे ही ये एक्सीड करेगा, रिमेंबर दिस, द मोमेंट इट स्टार्ट्स एक्सीडिंग यू नीड टू रिमूव, क्योंकि जैसे एक्सीड कर गया अपन को हैश से हटाना पड़ेगा. तो हैश से हटाने के लिए बहुत सिंपल है, अपन क्या बोलेंगे, ए भाई सुन, आई प्लस के पे जो बंदा है इसका इंटीग्रल वैल्यू ये है, इनटू ये पी आर पी स्क्वायर जो भी होगा या पी क्यूब जो भी होगा, इनटू कर देना एंड फिर रिमूव कर देना. So this is the first multiplication that you do. So on the first multiplication, make sure you write modulo plus modulo and a modulo. By the way, for people who don't know modulo properties, it might look a bit alien. Basically, whenever you do a minus, you have to, yes, no matter what you do, if you're doing a minus, you have to write a plus modulo always. So please write a plus modulo. So I can say, if it is not going, keep on multiplying powers, increase powers, p square तक रख दो. ठीक है, नहीं ये वाला सही है, क्योंकि देखो ये वाला इसलिए सही है क्योंकि अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, हाँ रुको, अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे जाओगे, यहाँ जाओगे रिमूव नहीं होगा, यहाँ जाओगे रिमूव नहीं होगा, जैसे ही सी पे पहुंचोगे P0 P1 हुआ होगा, P स्क्वायर हुआ होगा, तो यहाँ तक P स्क्वायर होके रखा होगा, और जैसे ही सी पे पहुंचोगे तो रिमूव करना शुरू कर दोगे. क्या रिमूव करोगे, यहाँ से के पोजीशन पे E इंटू पी स्क्वायर, फिर टी पे पहुंचोगे तो D इंटू पी स्क्वायर रिमूव्ड, फिर E पे पहुंचोगे तो O इंटू पी स्क्वायर रिमूव्ड. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन लाइक दिस. गॉट इट? क्लियर है? दैट्स व्हाई आई रिमूव्ड इट लाइक दिस. Is this clear to everyone? Is this clear to everyone? Can I get a yes if you got this? Yes in the chat section. Okay, let's quickly run this off. If everyone has got it, hash into power भूल गया क्या मैं? कहीं तो कुछ मिस हुआ. हैश प्लस इंटू पी आर नहीं सही है, कहीं तो कुछ तो मिस किया. लॉन्ग हैश लिया था. e to the power k minus 1. Why we are not multiplying a pr in every step? Because you just remove p square. If you see the dry run that I did, you just remove p square. That's the last portion, right?
जस्ट रिमूव पी स्क्वायर। एनीवेज मैं एक बार देख लेता हूँ क्या मिस किया मैंने। हैश इक्वल टू एस ऑफ आई माइनस ए प्लस वन इंटू वन मॉड्यूलो। ठीक है ठीक है ठीक है, मॉड्यूलो गया मॉड्यूलो गया मॉड्यूलो आया, ईयर इंटू पावर करके मॉड्यूलो गया, न्यू एंट्री यार। लाइन 9 पे कुछ मिस हो गया क्या? वही मैं देख रहा हूँ कुछ मैंने मिस कर दिया कि नहीं। यानी एक सेकंड दे दो। हैश की वैल्यूज आ रही है, हैश की वैल्यूज तो सही आ रही है। ये इनपुट है 722, यूएसडी आउट यार 7 कोड है तुम्हारा इनपुट 7 30 2 0। क्यों नहीं आ रही है हैश इंडेक्स भाई? ईयर इंटू पावर टाइम मैंने मारा मल्टीप्लाई विद, अरे पी टू द पावर 0 है उसको हटा दो, क्या ही फर्क। एक सेकंड रुको यार, ये क्या पंगे होंगे। पी स्क्वायर, ओहो हो। एवरी टाइम वी आर गोइंग अक्रॉस वी नीड टू मल्टीप्लाई पी एज वेल। अरे एक गलती हो गया अपन से। अभी अगर हम हर बार नेक्स्ट पे जा रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी मल्टीप्लाई our hash value as well, right? Because the hash value has to be multiplied with the value prime. Do you understand this? Because every time you are going across, p की वैल्यू तो एक बढ़ जाएगी ना। भूल गया क्या? नेक्स्ट स्टेप पे हमेशा p कर रहे थे अपन, भूल गया ये वाला चीज। जब भी अपन जा रहे थे नेक्स्ट स्टेप पे वी वर ऑलवेज डूइंग, क्योंकि वो राइट मूव होगा तो एक पावर बढ़ जाएगा ना, इसीलिए एक पावर बढ़ जाएगा ना, वो गलती हो रही थी। बिकॉज वी आर मूविंग राइट तो एक p बढ़ रहा था ना। अल्शो कंपाइलर की मारा अभी। हाँ इंटू पावर, I'll show you the code। ये देखो यहाँ पे जो कर रहे थे अपन, जब अपन ई पे थे ई टू दी पावर पी जीरो था, फिर इंटू पी किया था ना नेक्स्ट स्टेप पे जब डी पे गए, फिर इंटू पी किया था ना जब नेक्स्ट स्टेप ओ डी पे गए। दैट स्टेप आई वाज मिसिंग, दैट स्टेप आई वाज मिसिंग। तो ओके लेट्स नाउ क्विकली रन दिस ऑफ, तो वी फाइन नाउ। अब आ गया, सबमिट मारते हैं फटाफट। चल जा भाई, टाइम एरर, धोखा धोखा। अब डिव वन क्यों नहीं करते? डिव वन आता नहीं है तो क्या करे भाई, डिव वन आना भी तो चाहिए करने के लिए। डिव वन इज समथिंग, आस्क एडिटर वगैरह को बोलो करने, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो यार? ask character to do it, isn't that much more beneficial to you? anyways इसको फटाफट चेक करते हैं। इंडेक्स इक्वल टू एन आया, हैश वैल्यू से बराबर है, मॉड्यूलो मारा, प्लस किया फिर मॉड्यूलो मारा, तो बड़े वैल्यूज पे फट रही है, इंटीजर ओवरफ्लो हो रही है, इंटीजर ओवरफ्लो हो रही है लॉन्ग लॉन्ग के कारण ही। मल्टीप्लिकेशन पे फट रही है। cool, that's how you can easily run it। ओवरफ्लो हो रहा था। लीड कोड, ओके is this clear to everyone? Clear to everyone mostly? can I get a yes? I think this was not hard। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इजी है, कुछ नहीं यार, काफी सिंपल है। पावर पी को मल्टीप्लाई करते जाओ, पी आर पे रुक जाना, क्योंकि पी स्क्वायर अगर के इक्वल टू 3 है तो पी स्क्वायर हटेगा, उधर ही रुक जाओगे। बाद बाकी रिमूव करना है और नेक्स्ट स्टेप पे मल्टीप्लाई पी कर देना है, क्योंकि राइट मूव होगा। यूएस फ्रॉम एवरीवन, यूएस फ्रॉम एवरीवन। लेट्स डू अ ड्राई रन ऑन द कोड बाय योरसेल्फ। इससे नहीं पीऊंगा फिर गाली देंगे लोग। नेक्स्ट स्टेप पे एक बार ड्राई रन कर लेना, समझ में आ जाएगा। यूएस फ्रॉम एवरीवन एवरीवन एवरीवन। Let's go back, do a dry run on the lead code, the example that I did। take the code, do a dry run। अब तो दिमाग में है ना क्यों हो रहा है, सब कुछ तो क्लियर हो जाएगा फटाफट से। मुझे नहीं पता है डिलीट होंगे कि नहीं,
जावा में लॉन्ग क्या होता है? जावा में लॉन्ग तो होता है ना, लॉन्ग यूज कर लो जावा में, हो जाएगा। हमें इफ यू यूज लॉन्ग आई थिंक इट शुड वर्क। क्रिमिनल स्टैडिया आई कंटिन्यू। इफ यू डोंट हैव एन इंस्टाग्राम देन यू कैन ड्रॉप अ मैसेज इन टेलीग्राम। टेलीग्राम पे भी काफी एक्टिव रहता है। बिग इंटीजर तो बहुत बड़ा हो गया, लॉन्ग से हो जाना चाहिए। आर यू इन हॉस्टल? या आई एम इन हॉस्टल। घर है मेरा, घर में हूँ। और टेलीग्राम जस्ट गो टू टेक यू फॉरवर्ड चैनल। टेक यू फॉरवर्ड चैनल पे जाओ एंड कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करो। वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा मेरे सारे सोशल मीडिया। भैया सीपी का लाइव कोर्स कोर्स नहीं पढ़ाना यार, बूट कैंप वगैरह नहीं पढ़ा। टीचिंग अ बूट कैंप इज़ वेरी हेक्टिक यार। 3 महीना मैं आपको कमिट करूँगा, 3 महीना हर सैटरडे संडे में मेरे को आना पड़ेगा आपको पढ़ाने के लिए। हर दिन सुबह उठ के मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा। सो इट्स अ वेरी हार्ड कमिटमेंट बिकॉज़ आई नो गोइंग फॉरवर्ड आई एम गोइंग टू यूरोप। सो सैटरडे संडेज़ आई विल बी विजिटिंग। हर सैटरडे संडे में कोई ना कोई दूसरा कंट्री में विजिट करने जाऊँगा। तो अगर मैं आपको कमिटमेंट दे दूँ एक कोर्स का, क्या मतलब है? Giving a commitment should only be done if you know that the next 3 months you can deliver. And I personally feel I'm done, man. I'm done. I wanna enjoy my life. मैं 2 साल से तो पढ़ा ही रहा हूँ। कितना यार पढ़ाऊँ तो थोड़ा एंजॉय भी खुद से कर लेना चाहिए। चेक कर लो पैरामीटर का, मतलब अगर नहीं हो रहा है तो वापस करो। मतलब पैरामीटर के डेटा टाइप के वैसे नहीं हुआ है, ये लॉन्ग लॉन्ग पीआर के वैसे हुआ है। मतलब लॉन्ग लॉन्ग प्राइम के वैसे ही हुआ है मोस्टली। पैरामीटर के डेटा टाइप के वैसे नहीं हुआ है, लॉन्ग लॉन्ग पीआर के वैसे हुआ है। ये मैं आईएनटी ले लिया था, प्राइम ओवरफ्लो मोस्टली। बस फिर सबमिट चल जाना चाहिए मोस्टली। लेट्स सी। हाँ, it was mostly due to the prime because I took the PR as integer, not because of long. भाई एंजॉय कर लो, बाद में सिस्टम नहीं भाई। और 1-2 साल नहीं हो पाएगा, हो गया। एक बार वंस आई गो आउटसाइड आई स्टार्ट ट्रैवलिंग, आई ट्रैवल ओनली, आई एंजॉय। मैं थोड़ा वीडियोस उतना नहीं डालना। अभी जितना डालना है डाल दो, कम करो जितना डालना। ओके। पैसे क्यों कमाते हो? आप पैसे कमाते हो एंजॉय करने के लिए ना। आप अगर because I feel 20 to 30 is the age where you will enjoy. After 30 you will have a family, you will have burden that you have to take care of, like काफ़ी सारे आपकी चीज़ें हो जाती है लाइफ में। 20 to 30 is the best age when you can travel the world, you can enjoy your life। and अगर आप उसी पे एंजॉय नहीं करोगे तो फिर बाद में आप फिर रियलाइज़ करोगे यार आई मिस्ड माई 20 to 30 का और एज, राइट। कल करेंगे, कल एक रेज्यूमे रिव्यू कर देंगे लास्ट। ठीक है, लास्ट स्ट्रीम रेज्यूमे रिव्यू कर देंगे बस। डी वाला क्वेश्चन आई फाउंड इट, आई फाउंड द डी क्वेश्चन। ओके, विदाउट वेस्टिंग काफ़ी टाइम हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है। ठीक है, ये हो गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? बिग ऑफ एन है। बिग ऑफ एन इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। एंड सिंपल एनफ, बिग ऑफ एन इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गोइंग फॉरवर्ड। और कुछ लग रहा है? नहीं, बिग ऑफ एन। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक 7 मिनट। ये क्या था? cool. I'll just start it. So I wanted to read the question. कल किसने देखा है? हाँ, कल फेयरवेल स्ट्रीम, उसको नाम कर देंगे फेयरवेल स्ट्रीम। ठीक है, 12 बजे से पहले खत्म हो जाएगा स्ट्रीम, क्योंकि 12 बजे क्रॉस किया तो फरवरी में काउंट होता है, फरवरी के पैसे नहीं देंगे।
तो अपन 12 से पहले उस स्ट्रीम को खत्म कर देंगे, ठीक है? 341 watching. For everyone watching out there, please press a like. Please press a like. Read the question in the meantime. कोड फोर्सेस, बहुत टाइम लगता है यार कोड फोर्सेस। क्वेश्चन पढ़ो, एक तो उसका स्टोरी समझो, फिर उसको सबमिट करो। फिर उसको ऐसे भी कोड फोर्सेस की ऑडियंस बहुत कम होती है। तब आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल, आजकल तो लीड कोड की ऑडियंस एक्सट्रीम हाई है। एंड माई आई एम मोर फोकस्ड ऑन प्लेसमेंट्स। लीड कोड कोड फोर्सेस के लिए प्रियांश वगैरह को पकड़ो, बोलो कि तुम स्ट्रीम क्या नहीं करता है। Read the question. We have 5 minutes or 22 seconds. Then we start. Both is giving TLE for 26 into 26 into n. Is it? Is it? Okay, let me check. मैप को रिसाइज किया था क्या? को रिसाइज किया था? मैप को साइज कर दो। मैप अनऑर्डर मैप ले रहा होगा बिग ऑफ एन। भाई एरिक तो वर्सो में रहता है। हाँ, हेल्पिंग हिम। मीटअप वीडियो बनाएंगे, वाह। स्ट्रीमिंग लाइव। For everyone watching now, you can definitely follow Take You Forward. All the upcoming Leetcode Weekly live streams will be on Take You Forward. ठीक है? All the weekly live streams will be on Take You Forward. वह यूपी में किसकी सरकार बनेगी? मेरे को क्या फर्क पड़ता है किसकी सरकार बने? मेरे पॉकेट में, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आने वाले। हाँ भाई, एरिक्टो के साथ शोडाउन करके कोई मतलब नहीं है, गंदा हरा देगा, बेइज्जती हो जाएगी। गंदा हराएगा वो तो, बोल बोल के। हाँ, लिंक लिस्ट के लिए एसडी शीट काफ़ी हो, इतने सवाल कर लो, काफ़ी है, उससे वो बाहर नहीं आता। लिंक लिस्ट के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा यार, उससे बात पर तो आप पूछ ही नहीं सकते। विल कंटेंट बी पुट इन टीयूएफ व्हेन यू गो टू यूरोप? हाँ। डिनर कंप्लीटेड। कैसे खाऊं पढ़ाते वक्त, कैसे खाऊं बताओ मेरे को यार। खा लूंगा। कल ऑफिस भी है, बट आई एम वेरी ग्लैड मेरा ऑफिस 2 बजे शुरू होता है, ये वर्सो टाइम है। तो मैं मस्त सोता हूँ यार, दिन के 12-1 बजे तक खतरनाक सोता हूँ मैं। मेरी मम्मी बोलती है क्या बंदा है, पूरा सुबह सोता है, आधा दिन निकल जाता है, फिर उठता है, दिन के 2-3 बजे ब्रेकफास्ट करता है। मेरे घर वाले मेरे से परेशान है फिलहाल। मतलब उल्टा मतलब मेरा ज़िंदगी उल्टा चलता है। मैं 2-3 बजे उठता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, लंच करता हूँ 7-8 बजे, और मैं डिनर करता हूँ रात को 2-3 बजे। पूरा उल्टा साइकिल है मेरा। मतलब 6, मतलब मैं अभी से ही व्हाट्सएप के टाइम जोन पे चलता हूँ। टाइमर के लिए कोड इंस्टा पे भेजा है ब्रो फॉर ऑल डर्टी हैबिट्स, डोंट बी प्राउड। डर्टी हैबिट्स नहीं, अच्छा हैबिट है यार। अच्छा ना, अभी से व्हाट्सएप के टाइम जोन पे जी रहे हैं। उह, पेट खराब। क्या लॉजिक है, पेट खराब क्यों होगा भाई अगर लेट उठूंगा तो? फरवरी 1 को बजट देखोगे ना? हाँ भाई, शेयर मार्केट तो गिरने वाला है बजट के बाद, मेरे को पक्का पता है। वापस और एक डिप आएगा।
हेल्थ इज वेल्थ, हाँ हेल्थ इज वेल्थ। ये देखो हेल्थ। 1 minute to go, प्लीज रीड द क्वेश्चन। भैया गूगल आपको कितना दे रहा है? घर चल जाता है भाई, उतना दे रहा है। नहीं नहीं नहीं, अमेजन में करना है यार। भाई टैग, टैग के फॉरवर्ड को डिलीट मत करवा देना। हाँ कर देंगे, भेज देंगे टिक फॉरवर्ड। 4.5 या इट्स अराउंड 4 hour to 5 hour का टाइम डिफरेंस। आपकी फैमिली वाले मान गए तो आपको दूर भेजने को? अरे मेरी फैमिली में मेरे पे मतलब अगर मैंने कुछ बोल दिया तो उस पर कोई कुछ बोलता नहीं है। इट्स मोर लाइक व्हाट एवर आई फील आई डू। आई हैव ऑलवेज बीन गिवन दैट लिबर्टी टू, जो मुझे फील होता है ऑलवेज डू। दे आर लाइक ओके 352 वॉचिंग नाउ, अमेजिंग अमेजिंग। प्रोग्रामर के लिए पेन टैबलेट ज़रूरी है। 50+ LPA तक है ना गूगल में, क्या पता भाई। चलो हो गया, शुरू करते हैं। टाइमर इज अप। ओके लेट्स रीड द क्वेश्चन। टाइमर वाला सिस्टम अच्छा है। आप आराम से अपना क्वेश्चन पढ़ो, जिस जो पढ़ा नहीं है कॉन्टेस्ट म्यूट करके। ओके, क्या फर्क पड़ता है भाई अनअकैडमी वाले कितने दे रहे हैं? और तो नहीं होगा ना, तो अभी जान के क्या करोगे? लेट्स रीड। यू आर गिवन a zero indexed array of string words. Each string consists of lowercase English letters only. No letter occurs more than once in any string of words. Two string S1 and S2 are said to be connected if the set of letters of S2 can be obtained from set of letters of S1 by any one of the following operations. As the operation, you can add exactly one letter to the set of letters of S1. So basically, if you add one letter to a string, you get a string, then they can be a part of a group, like connected बोल सकते हो. Deleting exactly one letter from the set of the letters of S1. So if you can delete one letter from the set of the letters of S1, then they are connected. Replacing exactly one letter, like if you can replace or not, अगर दोनों बराबर है strings तो भी connected है. एक अल्फाबेट को रिप्लेस करोगे तो कनेक्ट हो रहा है तो भी कनेक्टेड है, ठीक है. The array words can be divided into two or more. Like it's given, like it's a mandatory stuff that you can divide them into one or more non-intersecting groups. मतलब either वो एक ग्रुप के पार्ट होंगे या फिर बहुत सारे ग्रुप्स के पार्ट होंगे. A string belongs to a group if any one of the following is true. It is connected to at least one other string of the group. At least one other string of the group से connected है. It is the only string present in the group, even if it's single. वो अगर अकेला है, सिंगल आदमी है, तो भी वो अकेला ग्रुप बनाएगा. सिंगल आदमी को नहीं छोड़ेंगे अपन. Note that the strings in words should be grouped in such a manner that a string belonging to a group cannot be connected to a string present in any group. So क्या लिखा है? Note that strings in words should be grouped in such a manner that the string belonging to a group cannot be connected. तो बेसिकली ऐसा कोई स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए जो दूसरे ग्रुप से कनेक्टेड हो. It can be proved that such an arrangement is always unique. ठीक है. Return an array answer of size 2 where answer 0 is the total number of groups of words that can be divided into, मतलब जो भी कितने ग्रुप्स में डिवाइड हो सकता है, and the size of the largest group. ठीक है. So for an example, I can say over here, this is a group and this is a group. ठीक है. So there are a couple of groups. One is A, B, C, D, E. Now I can say that in AB, yes, in AB, if you delete B, you will get A. So I can say A and AB are connected because if you delete B, you are going to get A. Similarly, I can say in AB, if you delete A, you're going to get B. So I can say A, B are connected. So all of these are connected. Hence, they can be a part of group because A is connected to AB is connected to B. So at least they're connected to one of them. Now CDE is not connected to anyone. So CDE is single. So I can say there will be two groups and the maximum size of the group is 3, which is this one. So you say 3. Okay. Next example देखते हैं. A, AB, ABC.
Now I can say if I have an ABC, yes, if I have an ABC and I decide to delete C, if I decide to delete C, I'll get an AB. If I decide to delete B, I'll get an A. So I can say all of these belong to the same group. So thereby there is a single group with size 3. There is a single group with size 3. Similarly, I can say if I give you an example, DE and DC, I can say they belong to the same group. Why? Because in DE, if you decide to replace E, remember, you are allowed, I repeat, remember, you're allowed to replace any one of characters with a different character. So E can be replaced with C and you will get DC. So thereby you can get DE to DC. So you can say this is a part of similar group, right? Even something like DE and DE are groups because they are equivalent. You are not replacing anything. So they are equivalent. So you need to figure out how many groups can you divide them into and what are the number of ways. So is the question clear to everyone? Question clear to everyone? US? Question clear to everyone? Question clear to everyone? Right? Clear to everyone? सबको आगे समझे? Okay. So first of all, the prerequisites are disjoint set. So if you don't know disjoint set, please drop off. Please drop off right now. I'm not gonna teach disjoint set. I'm assuming you know disjoint set. Yeah. Next. So disjoint set नहीं आता तो दूसरे वीडियोस देखो फिर आके ये देख लेना. Disjoint set सीख लेना. In my graph series, I've taught the disjoint set, so please go and watch it out. Alright, let's come back. So over here, I can say that let's read this line as of now. No letter occurs more than once in words I. No letter occurs in more than once in words I. So firstly, over here, can we represent, since it's clearly stated that कोई भी एक word पे repeated letters नहीं होंगे. So let's come back to something like this. Okay. So first of all, logically speaking, I want to represent a string in terms of an integer. Again, there are a couple of ways. I write an hash and I generate the integer. But over here, there can be a very simpler way. Since I know that in string, we will have all the unique alphabets. Like none of the alphabets will be repeating. So what I can do is I can use something like bit mask to store the string in form of an integer. For an example, if I give you A, C, E, this is the string that I've given you, ACE. So I know there will be 26 characters at maximum in a string. Because if they are stating all the characters are unique, at max there will be 26 characters. Do you agree? There will be at max 26 characters. तो अपन क्या करेंगे? 26 bits ले लेंगे. ठीक है? I'll take 26 bits. I'll just take 26 bits. I'll take 26 bits. Okay. Now I'm saying A. This is index 0, index 1. Sorry, yes. C is index 2 and E is 0, 1, 2, 3, 4. So I have indexed them in terms of 0-based indexing. So index 0 is this, I'll turn it on. Index 2 is this, I'll turn it on. 0, 1, 2, 3, 4. Index this. So this is representing A, this is representing C, this is representing E. Now, if I convert this is bit manipulation. If I convert this into an integer, what will be the value? What will be the value of this? It will be 2 to the power 0 for A, 2 to the power square for C, 2 to the power 4 for E, which is 1 plus 4 plus 16, which is 21. So basically ACE can be represented as 21. Basically ACE will be represented as 21. Hashing would have taken a lot more time. Prime आता, modulo आता, time consumption होता. But इधर मैं easily bit masking से कर सकता हूँ because I know we will not have repeating letters. I know we will not have repeating letters. So every number can be represented as an integer over here using bit masking. ठीक है? राज ग्राफ सीरीज में डिसजॉइंट सेट है, ग्राफ पढ़ो तो ये आएगा, नहीं तो नहीं आएगा डिसजॉइंट सेट. ठीक है?
Is this clear? How to represent a string in terms of integer using bit masking? US from everyone. US from everyone. Yes from everyone. Oh yeah. Okay. So we can represent every string in forms of integer, right? Now let me just give you an example. एक string दे देता हूँ. What are the operations? The operations are, you can have an addition. So let's not consider addition because addition means किसी से delete होके आया होगा. Addition means किसी से delete होके आया होगा, है कि नहीं? तो addition को consider नहीं करते. Let's consider deletion because delete होने से कोई एक बनेगा. Let's consider replacement. ठीक है. So let's first do the deletion stuff. So what can you delete? So if you delete ACDY can be with CDY because if I delete A, I can be with CDY. I can delete C, so I will be with ADY, correct? I can say I can delete D and I'll be with ACY. And I can say I'll delete Y, so I'll be with ACD. Do you agree? If I do deletion of single characters, so at maximum ये बंदा इससे जुड़ सकता है, इससे जुड़ सकता है, कनेक्ट हो सकता है, इससे जुड़ सकता है, कनेक्ट हो सकता है, या फिर इससे जुड़ सकता है. क्या आप अग्री करते हो? मेरे से? डिलीशन तो इससे ज्यादा तो कुछ डिलीट में कर नहीं सकता. डू यू अग्री? एंड सेम हो गया, ADY से एडिशन करेंगे तो ये बन सकता है, तो एडिशन भी ऐसे कवर्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली कनेक्शंस में. तो डिलीशन करेंगे तो एडिशन भी कवर्ड हो जाएगा, क्योंकि एडिशन मतलब किसी से तो डिलीट होके ही आया होगा ना, राइट? सो इन दिस वे आई जस्ट नीड टू मेक श्योर व्हेन आई डिलीट A, is CDY there in the array? If CDY is there, I'll make a connection. If ADY is there, I'll make a connection. If ACY is there, I'll make a connection. If ACD is there, I'll make a connection. Absolutely perfect. Right? What about replacement? Think and tell me how will you manage replacement? So can I say the replacements can be ACDY. Instead of A, I can have anything. I repeat. I can have anything from A to Z. Do you agree? I can have anything from A to Z. Do you agree? Instead of A, I can have BCDY, I can have CCDY, I can have DCDY, and so on till ZCDY. Similarly, if I replace C, I can have another 26. Similarly, if I replace D, I can have another 26. Similarly, if I replace Y, I can have another 26. Do you agree? In this way, I can have 26 connections extra. यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक आ गया आपको समझ सबको? क्लियर है? तो इधर आप एक बंदे को रिप्लेस कर दो, या फिर आप बोलो कि भाई एक बंदे को रिप्लेस कर दो, या फिर वो कर दो. अब मेरे को बताओ आगे आप क्या करो, सोच समझ के बताना. आप आगे आप क्या करो? ने एडिशन का तो बता, डिलीशन का तो बता दिया, रिप्लेसमेंट भी मैंने बता दिया, है कि नहीं? आगे क्या करो? What will you do in the future? Just make connections. Just do these deletions and just make connections. At the end of the day, आपको पता चल जाएगा इजीली कि कौन सा बंदा किसके साथ जुड़ा हुआ है और कौन सा बंदा किसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है कि नहीं? है कि नहीं guys? Just need to make sure in order to do this. Okay, so can repeat the letters though. You can repeat because there might be similar ones. So कनेक्शंस बनाने के लिए कोई भी यार DSU यूज कर लो ना, कनेक्शन बनाने के लिए. क्लास में पता चल जाएगा कितने कनेक्शंस बने हैं, किसका साइज ज्यादा है, सिंपली हो जाएगा. विशाल, इट्स स्टेटेड दैट इट कैन हैव सेम. सो आपको क्या करना है, अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा. चलो,
A B A B C. Let's take the first example only. And what is the first example? A B C D. A B A B C D E. ठीक है. Let's take the first example and try to do. So I have A. ठीक है. I have A. Okay. So when I take A, what can I have? I can delete A. So if I delete A, I will get null. And null is not there. Null is not there in this array. As of now, मैंने null encounter ही नहीं किया ही नहीं है encounter. तो अगर encounter किए नहीं है तो A तो किसी के साथ connection नहीं बनाएगा. A की जगह B भी हो सकता है, C भी हो सकता है. Replace अगर करता, अगर replace करूंगा तो Z तक हो सकता है. बट अभी तक मैंने देखा ही नहीं है कोई ऐसा, तो बनेगा नहीं. A का किसी के साथ connection नहीं बना. अभी याद रखो A मेरा मैप में है. A is in the map. Let's go to B. So what can I do? I can delete. So if I delete, I'll get an empty string. But in the map, I don't have an empty string. So I cannot make a connection. I cannot make a connection. So no connection. B can be replaced to A. B can be replaced to A. B can be replaced to A. And A is already there. So can I say B will make a connection to A? Because this B can be replaced to A and A is there in the map. So I can. So the connection is made from B to A. It can be C, it can be D, but none of the other connections will be made. So done. So make sure you have B in the map now. Next, you go to AB. You can delete A. If you delete A, you will get B, which is there in the map. So AB makes a connection with B. Perfect. I can delete B. I'll have A. So AB also makes a connection with A. AB can also make a connection with A. Perfect. Replacement. I can replace this with A, but AB is not there in the map. AB is not there in the map. I can replace this with B. BB is not there. Replace this with C. CB is not there till Z. ZB is not there. I can replace this with A. Double A is not there. I can replace this with B. AB is not there. I can replace this with C. AC is not there. I can replace this with D. ED is not there. I can replace this with E. E is not there. So as of now, I can just make these three connections. And CD है, चलो CD पे करेंगे. अभी AB को रख देते हैं. AB चला गया. CD है. रिप्लेस करोगे, डिलीट करोगे, कुछ नहीं आएगा. D नहीं है. C E नहीं है. CD नहीं है. तो नो कनेक्शंस मेड. रिप्लेस करोगे, कोई कनेक्शन नहीं बनेगा. So ultimately CDE will be single. And if it's single, you know there is a size 3 which is maximum and there's a size 1. In total there will be two groups. If there are two groups, you can easily say, oh bhai, this is the answer. Is that clear to everyone? So try to delete and try to do every stuff. Clear to everyone? This is clear to everyone? Clear to everyone? Can I get an yes? Get it, Baba अपन. थक गए आज. लॉजिक आ गया ना सबको? I'll not go into coding. तुम लोग डिस्कशन से देख लेना. ठीक है. डिस्कशन देख लेना, मतलब सेम ही लॉजिक पे लोगों ने कोड किया. मैं और कोड करने नहीं जा रहा हूँ अभी, क्योंकि फिर लग जाएगा 20-30 मिनट. एंड आई डोंट थिंक आई एम डन फॉर टुडे. So hopefully you have more or less understood how to do it. So अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है. नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं कर सकते. शायद थोड़ा सा भी और आपको टाइम लगेगा. ट्राई टू चेक इट आउट फ्रॉम डिस्कशन. ठीक है. डिस्कशन में कोई भी कोड खोलना, आराम से दिख जाएगा. एंड सेम ही लॉजिक से किया है. डिलीट करेगा या फिर रिप्लेस करेगा, कनेक्शंस बनाएगा. और अगर आप DSU यूज़ कर रहे हो तो कुछ नहीं करना है. एट द एंड ऑफ द डे कितने यूनिक पेरेंट्स हैं? Number of groups will be number of unique parents in DSU. If you know DSU, number of groups will be number of unique parents. Agreed? And by rank compression कर लेना, sorry, size compression मार लेना.
सो हर पेरेंट का साइज नहीं पता होगा, साइज साइज एरे में होगा तो ग्रेटेस्ट साइज होगा आंसर, ग्रेटेस्ट साइज आंसर होगा एंड नंबर ऑफ ग्रुप्स विल बी नंबर ऑफ यूनिक पेरेंट्स. कूल. यूएस. यूएस एवरीवन. Everyone's US, everyone's US, everyone's US, 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 US. Cool. Please add generate all BSTs with EndNote. Okay, देख. और नहीं होगा स्ट्रीम. अभी डीपी वाला लेक्चर भी रिकॉर्ड करना है ना कल के लिए. मैं जाऊंगा डीपी वाला लेक्चर भी रिकॉर्ड करेगा अपन. तो फिर सोना भी है, कल ऑफिस भी करना है. काफ़ी ट्राई से बहुत टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाई हो जाएगा. अगर आप ट्राई यूज़ करोगे तो काफ़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऊपर चल जाएगा. ट्राई से आप बेसिकली सर्चिंग में ज़्यादा यूज़ करो ट्राई को. यहाँ पे सर्च थोड़ी हो रही है, यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स कनेक्ट कर रहे हो, राइट. तो not preferable. Even if you do by try, the memory use will be huge. Complexity भी काफ़ी हाई हो जाएगा. ठीक है. As union by rank, both are same, but over here you will do by union by size because we need the size of the largest group. So for every unique parent, you need the size. So you need to be knowing union by size, otherwise there will be a problem, right? Any other doubts? कैसा था आज का क्लास? आज क्लास कैसा था? मज़ा आया? थर्ड क्वेश्चन पे तो पक्का मज़ा आया होगा. इतना सारा सीख मिला थर्ड क्वेश्चन पे, है कि नहीं? So for the next Leetcode Weekly, it's on Sunday on my channel. Okay, on my channel, not over here. All the best, Abhishek. Okay, मजा आ गया. चलो, good night, guys. Bye bye. Take care. I'll just end it on a couple of minutes. Join late, कोई बात नहीं, वापस देखना. I think today's contest was a good one. It was a good one. The last question कहीं पूछेंगे नहीं. Last question was a bit tough. I don't think it's gonna be asked any. But till the third question it was good. Even the second question was good or medium level का. आज यहाँ पे लास्ट लीड कोड का स्ट्रीम कल करेंगे. एक तो बेकार नॉर्मल लाके रात को 10 बजे स्ट्रीम करके चल जाऊंगा. डेढ़ डेढ़ घंटा 145. कॉपी इज अ गुड कम. कोड बियॉन्ड क्यू बंद कर. आई गॉट टायर्ड है. 2 घंटा ट्राई करो कभी आके बोलने का स्ट्रीम पे एनर्जी के साथ, तो समझ में आएगा टायर्ड हो कि नहीं. भाई अभी आधा घंटा रेस्ट करूंगा तो फिर ठीक. मैन कॉन्ग्रेचुलेशन. Last question may come in online route. Highly skeptical. Highly skeptical about. I've added some problem from AdCoder already. The vacation problem, Ninja's training का जो problem है, DP7 is added from AdCoder only. Frog jump is added from AdCoder only. और नहीं होगा यार, अब January daily